Dear students, once again greetings to everyone. सबको नमस्कार. Good morning. Once again say loudly good morning. Good morning. Okay. Why we gathered here? हम लोग क्यों यहाँ इकट्ठा हुआ है? बोलिए, कोई बोलिए. क्यों हम लोग यहां इकट्ठा होने का कारण, पिछले साल जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन प्राप्त किया उनको पुरस्कार और कैश अवार्ड देने के लिए बैठा हुआ. ओके, दिस इज ए वेरी स्पेशल डे ऑफ आवर स्कूल. रीजन व्हाट? We have gathered here to celebrate hard work, dedication, and success. This is not just a praise distribution. ये केवल praise distribution नहीं है. Then what? It is a day of recognize effort, encourage dreams, and inspire. Every child is sitting here. Then today you will get a reward, a scholarship and medal that is for your hard work. जो आपको मेडल और कैश अवार्ड जो मिलेगा, it is for your hard work. What is mean by hard work? बोलिए. कठिन परिश्रम और डेडिकेशन एंड सक्सेस. Examination really a competition. Examination what? Listen here. Examination is really a competition. Suppose in a class 30 students are there in a class. How many students will get first, second, third? Only 3 students. Suppose 30 बच्चा एक क्लास में है तो कितना बच्चा का मेडल मिलेगा? 3. Listen here. 3 students. First, second, third. Suppose a running competition, 5 or 10 students are running together, but how many students will get first prize? 1 student. 1 person or 1 student. Then you have to do one thing. You can reach, listen here. You can reach the top of the position above the 95% or 90%. 3 students only get first and second, third prize, but all of them will get above the 95% mark. 3 बच्चों को केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड मिल सकता है, लेकिन सबको 95% के ऊपर मार्क लेने के लिए मार्क ले सकता है कि नहीं? देन व्हाट वी हैव टू डू फॉर गेटिंग द सक्सेस? सक्सेस मिलने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? हैं? आप लोग कितना बजे उठते हैं? इन व्हाट टाइम यू गेट अप एवरी डे? In what time you get up every day? Then please respond. Any person, please respond. कोई भी बोलिए, कितना बजे जागता है? ये छोटी, कितना बजे जागते हो? 5 बजे. Then in what time you get up? 5 o'clock. In what time you
go to bed 9 o'clock or 10 o'clock. Is it right? In school time, you reached our school at 7 o'clock. The 12:30 or 1 o'clock, you will go to your home. Very few time you are staying in the school. Rest of the complete time you are in your home. अब बाकी सब समय आप अपने घर में हैं. The responsibility of parents is very important. Parents का जिम्मेदारी बहुत important है. The responsibility of parents is very important. Then what I am going to say, without hard work you will not get success. यदि मेहनत नहीं करोगे तुम लोगों को कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी. Listen everyone here. Without hard work you will not get the success. बोलिए, without hard work you will not get success. Reason, the hard work is very important. No shortcut for success. Success के लिए कोई shortcut नहीं है. What is mean by shortcut? संतोष सर, what is mean by shortcut? छोटा मार्ग. एक लंबा रास्ता है, लेकिन शॉर्टकट एक छोटा सा रास्ता भी उसी में है. Now success is not you will not get a success in shortcut ways. The hard work is very important. With hard work and dedication. What is mean by the dedication? Tell. Samarpan. Dedication. You need a dedication to get the success. Without the dedication, never we get the success. Understood? You never get a success. If you want a success in your life, there is no shortcut. You have to work hard and dedicate, then you will get the success. Then we are celebrating today. First of all, I would like to congratulate all the students who are receiving the scholarship and medals today. You have worked hard, stayed focused, and achieved excellent result. Why? You received the medal and scholarship. You worked very hard. Your dedication and your hard work, that to bring the good success in your life. Without hard work, without dedication, without commitment, you will not get the success in your life. Then, dear students, your success is not just your own. आपका सक्सेस केवल आपका नहीं है, फिर किसका है? The success, your success is not only for yours, but also your parents or your teachers and your schools. तुम्हारा सक्सेस केवल तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारा पेरेंट्स का डेडिकेशन का है. इसी में तुम्हारा सक्सेस में तुम्हारा माता पिता का हाथ है. टीचर लोग का
इन्वॉल्वमेंट है और योर स्कूल का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने क्या बोला? जो सक्सेस केवल आपका नहीं है, आपका माता पिता का भी है। आपको जो पढ़ाया टीचर का ही है, आपको जो गाइड किया स्कूल का भी है। द सक्सेस इज नॉट ओनली फॉर यू बट ऑल्सो द पेरेंट्स एंड टीचर्स एंड द स्कूल्स, दे वर्कड वेरी हार्ड। दैट इज व्हाई you got the success. Now we are celebrating the achievement, or those who received the medal and prize, they will get the congratulations and best wishes. But those who did not get the praise, you try to come the first and second. Stay humble. Keep learning and aim. You have to aim. The much desire, the great dream in your life. You need a great desire and a lot of dream in your life. Or those who do not get the praise, never disappointed. कभी भी आप दुख नहीं होना चाहिए. Trying to again, आप again try करिए और study करना. When you make the mistake, you have get the time to study what I have made the mistake. Once again, failure is the stepping stone of success लिखा हुआ. कभी भी आप फेल हो जाएगा. आप कभी भी दुख करने का कोई जरूरी नहीं है. लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, तुम्हारा मिस्टेक से आपको लर्निंग करना चाहिए. और नेवर गिव अप, कभी भी परिश्रम कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए. नेवर गिव अप इन योर. Every successful person has failed many times. See, जितना सक्सेस हुए आदमी लोग कई बार फेल हो चुका है. एग्जाम्पल थॉमस अल्वा एडिसन, he failed many times, but Einstein, he failed many times. But continuously you are working hard. Your effort is going to continuously. One day you will get a success in your life. So, education is very important. Education is most powerful in your life. Education is most powerful weapon. आपको समझना चाहिए. Okay? आप ध्यान से सोचना. Think clearly. Make a good decision in your life. Become a good human being in your life. Or I want to say to you, respect your parents. आपको माता पिता को आदर करना चाहिए. Listen to your teachers. आपको टीचर लोगों की बात सुननी चाहिए. And be kind to others. सभी लोगों के साथ दयालु होने चाहिए. क्या क्या है? Respect बोलिए. Respect your parents. जोर से बोलिए. Respect your parents. Listen to your teachers. Be kind to others. Oh, that is why my little children, आपको करना क्या है? Study daily. Listen to your teachers. Practice good habit. अच्छा आदत तो बनना चाहिए. आपको अच्छे आदत करना चाहिए. और you will grow into strong and successful individuals. Always be honest. आप बड़ा होगा, मजबूत होगा, सक्सेस होगा. तब आपको करना क्या है? ऑनेस्ट, ईमानदारी होना चाहिए. ओबीडियंट एंड हैप्पी टू लर्निंग.
नया नया चीज सीखने के लिए आपको मन होने चाहिए। और माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ योर लाइफ। दिस इज द टाइम टू बिल्ड डिसिप्लिन, develop a good habit, and discover your talent. Everyone has talent. God has given every student, every person something we must use. Okay, then I would like to thank all the parents, your support, sacrifice, and encouragement play a huge role in your child's success. पेरेंट्स को धन्यवाद देने चाहते हैं। आप अपने बच्चों को सक्सेस करने के लिए आपका सपोर्ट, सहायता, आपका सैक्रिफाइस और आपका एनकरेजमेंट इसके पीछे था। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्लीज कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करिए टू मोटिवेट योर चिल्ड्रन, सपोर्ट देयर ड्रीम्स एंड गाइड देम विद लव। The message to the teachers. How many teachers are standing here? I want to give you the message to you. My dear teachers, you are the backbone of this institution. आप ये institution का backbone हैं. Not only the institution, but also each and every child. You are the backbone. Your dedication, your patience, your hard work are shaping a student's future. Thank you all of them. And my dear students, I want to conclude my message. Dream big, hard work, believe yourself. Success comes to those who never give up. आप अपना से विश्वास करिएगा। और once again, congratulations to all the winners and the best wishes to every student for the bright and the successful future. Okay, let us continue to work together to make our school proud. Thank you everybody. Thank you everybody. Jai Hind.